Hello. Hi, Pallavi. Hi Sumedha, can you hear me? Yes. Am I audible and visible? You are audible somehow. Your video is not visible to me. Okay. How is it now? I still can't see it. But I can see you. I think I should be visible now. Everything is working correctly at my end. I think we have four viewers with us. Shilpi ji and Taruna ji. Can you please confirm if you both can see Sumedha, or is it just me who can't see her? Hi, can you see me? Let me leave and let me join back again. Okay, okay. Am I visible now? Please say yes. You're not. Okay, Shilpi ji has said as yes, I am visible to her. Okay, then it must be in my phone or in my network. Anyways, I think let's just carry on. We should move forward because if Yes. people can see you, I think that's the whole point of doing the live. So let's continue. Maybe I can continue with the live without having to look at you. Okay, so shall we start with this little introduction to our audience? So, would you like to Absolutely. introduce yourself? So my name is Pallavi Singh, and I am a counseling psychologist. I have known Sumedha for almost Okay. 5 years now, 4 or 5 years now. And so we have worked together, we have studied together, we have known each other professionally and personally. We did a live last year also on World Mental Health Day. So keeping up with the tradition, we do want to have more lives on World Mental Health Day with each other or without each other. So we both work with people who have been through trauma in our own ways. I work with a lot of children, their families, and adolescents. And of course, I do take Sumedha's suggestions, I take her advices, and I do take supervision from her time to time. So, uh, Peer yep, supervision, both up of to us take you. supervision. Yes. Thank you, Pallavi. So, as she told that we both are colleagues come friends now since we know each other for 4 years. And today we just decided to have an open conversation about the mental health because of the special day. Happy World Mental Health Day to you. So, I am a counseling psychologist as well. I work with trauma, mostly with young adults in anxiety, depression, grief. And let's just start with the talk then. So, what did you do for your mental health today, by the way? Today, what did I do for my mental health? I started my day off with a little dance. I love to dance. I practice dance movement therapy. So I make sure that I start my day with some movement. There are days when, of course, I can't, but then I did do some dancing in the morning today, and I feel that my day went really well. When I started off on a high note, my day is gonna end on a high note. So mental health is not just mental, it's physical as well. Yes, What did you do? that that's quite wholesome what you did.
I try to follow my routine as I planned, and I especially do not miss my breath work and exercise workout. That keeps my mood uplifted throughout the day. So I started my day with that. So, to begin with, we did our bit for our mental health. I would also like to know from our audience, please keep interacting with us. Please be responsive as much as you can. It's an open discussion. It's just not between me and Pallavi. What Right. all did you guys do, or did you guys try to do anything for your mental health today? Anyone would like to say something? We Mm, do have a few viewers with us. yes. Has anyone tried anything for their mental health today? I think no. Or It, probably this we week did or not. this month, if not today. We don't feel that it's important. Yeah, it demands some amount of attention and priority, or a specific isolated hour dedicated to our mental health. Oh, दिन someone replied, खत्म होने से खत्म होने वाला है. No, no, we'll try to cheer you up through our conversation if possible, and रोने से खत्म नहीं होने देंगे. तो absolutely. रोने से स्टार्ट हुआ, रोने से खत्म हुआ, चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. रोने से स्टार्ट हुआ इज ओके, बट रोने से खत्म होना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. We should not Absolutely. uh, let our negative emotions just go with the flow, and try to take some responsibility for them. Try to explore them as much as we can. But sometimes our routine, main survival activities, job, household work, everything, because of all these things, our mental health takes a back seat. I understand that it still feels like a luxury to us. Hello? Yes, yes. Hello? I'm here. I'm Hello, here. am Can I you see audible? me? Yes. Okay, yes, sorry. Okay, sorry. Your audio and video broke. So as I was saying that because of our mundane routine lives, work pressure, job, household chores, sometimes our mental health takes backseat. We don't Hmm. find it as important to pay our attention and time to. But ये Hmm. हुआ क्यों? How did it start to take a backseat? Have you ever thought of it, Pallavi? I think as and when I started to grow up, when I say grow up, I mean in my late 20s. In my late 20s, I realized that, my happiness should not be dependent on other people making me happy. My happiness is dependent on a lot of other things. Yes, sometimes it is dependent on, our friends, our families, our partners, but it should not be solely dependent on them. It is when I realize that my happiness is not completely dependent on them, was the day I feel that I truly was on my way to become happy. Like if I Hmm. feel that only one person is responsible, or only my family is responsible, then it's like I'm not taking accountability for what I do or what I don't do. I'm Hmm. going to blame other people then. That is Yes. exactly when I feel that my mental health started to get better, when I had this realization. And of course, there are good days and there are bad days. And instead of blaming the situation or blaming the other people in my circle or around me, I try to understand exactly what made me think this way. What Hmm. what made my day worse or better at the end of the day. Hmm. Of course, there are days I am unable to do it all the time. I cannot. But again, to be aware when it started, because it Hmm. doesn't just start like that. There are always, things that have already happened before your mood started to deteriorate. So Hmm. going back and seeing, like, it's like having a recap of your day or week is going to help you. You have to look back, you have to reflect, you have to introspect. Hmm. Um, and I
feel that we are not taught that in our households, in our families, in our school or colleges. We are not taught how to do that. How about you? Absolutely. Yes, I totally agree with that. Because we are not taught, we are learning from so many external platforms such as social media, outside workshops, that mental health has now taken a shape of something luxurious and fancy. And because of this, we feel that it's not as important as doing our daily routine things. But the fact that taking care of your mental health starts with your routine, starts with your discipline first. And as you said that you always reflected, you went inwards. So taking care of your mental health, as the theme itself says, it's a universal human right, and it's a very personal thing for all of us. Right. Therefore, it also makes it our responsibility that if we are affected by any situation or anything anyone said or did to us, we Hmm. should at least like take some amount of minutes to reflect on it, explore on it, that what happened in the environment that triggered us, and Correct. if we are feeling bad, what can we do to actually shift that mood internally and not just suppress it by going for a drink or a smoke or just numb it by watching Netflix or anything. Right. So, it first thing that we can establish is that if we are in a bad mood, it is our responsibility to take care of it. Nobody else. We can like you can seek support and help, but हर कोई मुंह में गराई लाके दे देगा, चबाना आपको खुद है. वो वाली चीज. Absolutely. Absolutely. हम्म. इस बात पर मैं बोलना चाहूंगी कि आपके हमेशा हर कोई आपको फीड भी नहीं करेगा. हमेशा हर कोई आपके साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों के ऊपर डालना भी गलत है. क्योंकि अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सबको सेल्फिश होना चाहिए. मैं हर एक इंसान से या कोई मुझसे अगर ये एक्सपेक्ट करे कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, उसका मूड ठीक करने के लिए या उसकी बात सुनने के लिए, हो सकता है कि मैं 100 में से 1 बार 2 बार 10 बार ना हूं, क्योंकि उस टाइम पर मैं खुद किसी चीज से डील कर रही हूँ. तो वही बात, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ, वो हमारे ही हाथ में है. जब हमारी तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर के पास खुद ही जाते हैं. कोई हमें आके बताता नहीं है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम डॉक्टर के पास चले जाओ. हम किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं. शायद हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली मेंबर्स हमको डॉक्टर के पास ले जाएं, बट उनको कंसल्ट करना भी हमारी ही चॉइस है. सिमिलरली, अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है या आपको लगता है कि डिटेरियोरेट होनी शुरू हो गई है, तो आप कभी प्लीज किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए. क्योंकि जब हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, हम लोगों के नुस्खे जरूर अपनाते हैं, बट शायद एंड में हमको दवाई ही ठीक करती है, ऑफ कोर्स दुआ के साथ. तो इसीलिए जब हमारी मेंटल हेल्थ किसी भी चीज से अफेक्टेड रहती है, हमको शायद हमारी फैमिली उस टाइम पे सपोर्ट ना कर पाए उस तरीके से जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हम इस तरीके से सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि शायद आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स को उस तरीके से सपोर्ट देना नहीं आता. तो just how parents choose how I want to give certain kind of education to my children, and later on the kind of education that the children want in college, in their post graduation. Similarly, they should have this thing of picking how to take care of my own mental health. Just how education is a right, mental health is actually a universal right that people must have, but unfortunately it's not. I don't see getting into practice. पढ़ाई वाला एग्जाम्पल बहुत एप्ट था मैम. सो राइट पे बात करते हुए, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल राइट. क्यों है यूनिवर्सल? बिकॉज ऑल ओवर द ग्लोब, कल्चर, कास्ट, रिलीजन,
everyone has this basic need of food, sleep and sex. लेकिन इन सब के आगे ना शायद किताबों में लिखा नहीं गया, इसलिए हम सबको पता नहीं है कि हमारी इमोशनल हेल्थ कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द फैक्ट दैट वी ऑल ग्रो अप स्टडिंग 5 प्राइमरी इमोशंस: हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट एंड एंगर. द फैक्ट कि ये प्राइमरी है, इनके आगे प्राइमरी शब्द बोला गया है क्योंकि हमारा ब्रेन वायर्ड है इनको एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि ये हमें कुछ मैसेज दे रहा है. So, Right. because of the fact that our brain is wired, हम लोगों के लिए ये एक बेसिक नेसेसिटी है कि इसको फुलफिल करना है. जैसे बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकते, फीड करना जरूरी है, ऐसे ही उसको रोता हुआ नहीं छोड़ सकते, उसको कंफर्ट करना जरूरी है. तो हम जब बड़े हो Absolutely. जाते हैं, हमसे भूख तो सरवाइव नहीं कर सकते. भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर लिया, मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं किसी भी वे में, चाहे डाइट कर लो या खुद से सोच लो बेटर फूड, हम कुछ भी सोचें, एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप ईटिंग समथिंग बिकॉज if we are not giving the food to our body, it Hmm. becomes difficult. तो जब Right. खाने के बिना हम मोटिवेशन आ रहा है हमें कि कुछ ऑर्डर कर ले, कुछ बना ले और खा ले, तो जब हमारा मूड खराब होता है तो हम मोटिवेटेड ही नहीं होते हैं. ये इसका पैराडॉक्स है. हमारा मूड Correct. खराब होता है, वी डोंट फील मोटिवेटेड इनफ टू रीच आउट टू पीपल. खाना ऑर्डर तब नहीं कर सकते हम अपने मन के लिए. Right. लेकिन यहाँ पे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग कि हमारे जो इमोशनल नीड्स हैं वो हमें एनिमल से और बाकी स्पीशीज से सेपरेट करके रखती है. द फैक्ट, बिकॉज ऑफ दीज इमोशनल नीड्स वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स आर्ट, सिनेमा, म्यूजिक, पोइट्री. क्यों सुनते हैं हम? अदरवाइज हम रोबोट है ना, हम कुछ फील करते हैं इसीलिए हम सुनते हैं, रिलेट करते हैं. तो ये Absolutely. इमोशनल Well said. नीड है Yes. जो हमें पेट्स या एनिमल्स के करीब लाती है, हमें रिलेशनशिप की नीड फील कराती है. Hmm. बेसिकली हमारी इमोशनल नीड्स है जो हमें पैशन और पर्पस भी देती है, लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, और फिर भी Correct. हम इनको निग्लेक्ट कर रहे हैं. सो आज का ओपन कन्वर्सेशन इसी मैसेज को सबको देने के लिए है Right. कि Right. your emotional needs is a universal right because it is necessary for your human body, for your growth. To thrive in life, Correct. you have to make sure and feel responsible that you feel okay and comfortable in whatever Hmm. emotion you are feeling. Negative है, Absolutely. anger है, hatred है, it puts us in complete discomfort. Because Correct. दैट डिस्कम्फर्ट मे बी वी डोंट फील कनेक्टेड टू अदर पीपल. मुझे अकेला छोड़ दो, बात नहीं करनी, पैसिव अग्रेसिव हो जाएंगे, हम डिफेंसिव हो जाते हैं. Absolutely. क्यों? हम बिकॉज हम बुरे हैं इसीलिए नहीं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि हम खुद ही अनकंफर्टेबल हैं. तो हम Absolutely. क्या करें? तो ऐसे Absolutely. टाइम पे इट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीक एनी फॉर्म ऑफ support, help, and if not from your friends and family, तो professional help. And Absolutely. one more Absolutely. thing, if I can add, talking of professional help, I also want to break this myth because people have this perception that therapy is expensive. उस टाइम पे वो अमाउंट भले ही ज्यादा लगे, बट ऑल्सो सी व्हाट काइंड ऑफ परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग रिटर्न्स यू आर गेटिंग. सो Correct. So true. अगर आप इस तरीके से सोचें कि आप अपनी लाइफ का ही कुछ भला कर रहे हैं थेरेपी में जाके, और Hmm. उस वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी को परसीव करें, तो मैं Hmm. बिल्कुल मानती हूँ कि इमीडिएट टाइम में वो एक्सपेंसिव लग सकती है, लेकिन उसका रिटर्न लॉन्ग लास्टिंग रहता है. अगर आप एक बार सीख जाओ अपने नेगेटिव इमोशन से डील करना, उसमें कंफर्टेबल रहना और डिफेंसिव ना होके दूसरों को हर्ट ना करना, ये एक स्किल है. Correct. Emotional awareness, emotional understanding is a skill Hmm. It is a skill that that needs to be learned. It's not like it's not gonna come to anybody overnight. It's a conscious practice. It's a conscious practice. so given that we all are wired to feel 5 primary emotions at all stages of life, चाहे हम छोटे हो चाहे हम बड़े हो, इनफैक्ट एडल्ट्स भी जब गुस्सा होते हैं तो बच्चों जैसे बिहेव करते हैं.
तो Absolutely. Right. Right. हम हमारे इमोशंस हमारा चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी बाहर निकालते हैं. एवरीथिंग फ्रॉम वेकिंग अप टिल एंड you experience in your daily routine is somehow influenced by the emotion you are feeling in the moment, and still you choose not to go to therapy, not to seek help. So, hmm. We don't, I feel people don't choose to go to therapy because, again, talking about India, the stigma that already is there uh, regarding mental health and therapy or counseling. But I feel that India has actually come, a long way now. People still have started to get out and seek therapy actively. But I feel that we do need to reach the suburbs or tier 2, tier 3 cities of India as well. That's going to take a long, long time. Hmm. But I feel that uh, the stigma is something that stops people from, and also the feel, the thing that they feel they're gonna be judged by the therapist as well, because they probably have been judged throughout their life by their friends or families or whoever. We have a question, Sumedha. Anunka is asking also, please talk about the difference between therapy and therapeutic. Do you want to take this? Sure, I can start with it. You can add on to it. Definitely. So, for people who don't have strong faith in therapy, as you said, that it's difficult to trust a stranger, because also as mental health, your emotional needs is a human right. Talking and knowing about your therapist is also human right. Your right as a client, you have all the right to question about educational qualification and training background of your therapist. थोड़ा सा डेविएट हो रहा है टॉपिक से, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. Mm. इफ यू फील रेजिस्टेंट टू गो इन टू थेरेपी विद अ बिलीफ कि स्ट्रेंजर है नहीं समझेगा, या मतलब अनकंफर्टेबल हो, आपको जो भी चीज अनकंफर्टेबल लग रही है, आप अपने थेरेपिस्ट से ब्लंटली फर्स्ट सेशन में, या इवन एक, यू कैन डू अ क्विक कॉल बिफोर अ सेशन एंड यू कैन एड्रेस ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. And after that you have your own right, and it's this, the Mm. decision is in your hands कि आपको थेरेपी लेना है कि नहीं. You have the right to Okay. reject your therapist as well. हाँ, as a client. So Correct. know your right as personally for your mental health, and as well as from the space of your client. Correct. Now coming to people who cannot afford therapy, or who try on their own to deal with things at first. Sometimes you will end up doing things that will make you feel good temporarily. उस टाइम पे अच्छा लगता है. उन चीजों को, उन हॉबीज को, एक्टिविटीज को हम थेरेप्यूटिक बोल देते हैं. Mm. किसी को कुछ शोज देखना अच्छा लगता है, फ्रेंड से बात कर लिया, बाहर घूमाए, सिगरेट पी लिया, कुछ भी हो सकता है. आपको इस इंस्टेंट डिस्कम्फर्ट है, आपने किसी एक्टिविटी में इंडल्ज किया, आपको वो अच्छा लगा, तो आपको लगता है कि आप डील कर सकते हो. लेकिन अंडरलाइंग नेगेटिव इमोशन आपके हेल्थ को और आपके थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करता है. ये चीज Mm. सब लोगों को Correct. पता नहीं होती. Right. Right. उसको डीपली एक्सप्लोर करने के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, उसको थेरेपी कहते हैं. और टेम्पररी कोई चीज जो आपको बेटर फील कराए, उसको हम थेरेप्यूटिक बोल देते हैं. सो Correct. I agree. पल्लवी, would you like to add anything to it? So I would just like to, give an example of what you said to add to that. Um, I have read it way too, way too many times, and at a lot of places. Uh, Singing is my therapy, retail is my therapy, dancing is my therapy. It can Hmm. be therapeutic for you. It is not therapy. It might make you feel good temporarily, like you said, but it is not going to solve the underlying issues of why you started to dance. Coming back to, dance, if you say dance is your therapy, uh, please go and attend a dance class for a month.
And you would know how many dancers throughout the world stopped dancing because those dance classes were traumatic for them to attend, because of the physical effort that it takes, or the mental toll, actually, the competitions, the rehearsals, the routines, the repetitions it has. It might be therapeutic for you after a long time when you have stopped dancing. It will be therapeutic in that moment. It is not going to treat the underlying source of your discomfort. So you can find something therapeutic, but it is not going to be therapy for you. To have that therapy, you would need to process through the way what you find therapeutic. If you find dancing therapeutic, go to a dance movement therapist. If you feel that you are okay with some sort of body work, or if you feel that you're okay with some kind of work that you find therapeutic, look for that kind of professional. There are so many professionals in India today. Trust me, every person who is watching this, there are so many professionals, so many brilliant ones who will help you the way you want to. But then you have to take that first step. Because again, like I said, it is a universal, not I, the WHO also says, people say, mental health is your universal right. It is your right. Just how you want to have food, you want to have shelter, you should have good mental health as well. So I feel that is the difference between therapy and therapeutic. You can find something therapeutic, but it is not going to solve the purpose of going to a therapy. I hope, Anunka, we have answered your question. Thank you, Nunka, for asking the question openly. And I would request everyone else who is listening to this talk, please feel free to ask anything and everything, because this might be your first step to claim your right for your mental health, maybe. And Right. coming to the point that mental health is fancy और is luxurious, या हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. पहले ऐसा नहीं था, अभी स्टिग्मा बना हुआ है. स्टिग्मा शायद इसलिए भी है बिकॉज ऑफ द वे सोसाइटी इज शिफ्टिंग. फॉर अर्लियर we used to have very collectivist community bound setups in our society. Hmm. अभी फैमिली जॉइंट से न्यूक्लियर हो गई है. People are preferring to live in separate floors, for example. It's very common, at least in our country, our state, it's very common. So जितना हम एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर से, उतना हम खुद को आइसोलेट भी कर रहे हैं एक फंक्शनल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से. And that isolation has impacted us again because we are not wired to grow in isolation. We are wired to grow in a community setup. Being a part of community and living in isolation, sometimes I wonder how conflicting it is for this little brain of ours to process this paradox. So stigma अब बन गया है क्योंकि पहले स्टिग्मा जैसी कोई बात ही नहीं थी. पहले सब साथ रहते थे, सब कुछ एक दूसरे पे को डिपेंडेंसी जिसे हम इंटरडिपेंडेंसी जिसे हम कहेंगे. ड्यूटीज वर शेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर शेयर्ड, एंड द फैक्ट कि बिलोंगिंगनेस एक फील होती थी. वी यूज टू गो बैक टू अ होम जहाँ पे लोग हैं वेलकम करने के लिए. जैसे जैसे सोसाइटी में शिफ्ट आ रहा है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग रिड्यूस होती जा रही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिडक्शन ऑफ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, वी हैव स्टॉप्ड फीलिंग बिलोंग्ड इन आवर बॉडी. हमें पता ही नहीं हम कहाँ किस शरीर में हैं, क्या कर रहे हैं. वी बिकम डिस्कनेक्टेड एंड वी एंड अप in indulging into defensive, impulsive or just numbing behaviors. Right. हम Right. क्या खा Because we रहे हैं, feel क्या attacked all देख the रहे time. हैं, basically. Because individuals have started to feel attacked all the time. The defensiveness comes from the feeling of being attacked. Yes. So, apart from your emotional needs, that includes to be seen, to be heard, to be understood. आसान भाषा में
अगर आप कुछ भी फील कर रहे हैं, आप ये डिजर्व कर रहे हैं कि कोई ये बात को सुने और आपकी बात को भी मायना दिया जाए, वैल्यू दी जाए और उसको रिस्पेक्ट दी जाए। ये आपका एक यूनिवर्सल राइट है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो आप खुद से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज हाउ आर फिजिकल एंड माइंड एंड बॉडी कनेक्शन वर्क्स। एक बार Right. जब हम अपनी इमोशनल नीड को रिस्पेक्ट करना बंद कर दे, हम बेसिकली एक तरह से अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना और खुद को रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। इसीलिए Right. Right. अगर हैप्पी फील नहीं होता है तो कॉन्फिडेंट भी फील नहीं होता है, मोटिवेटेड भी फील नहीं होता है, एनर्जाइज फील नहीं होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो माय पॉइंट इज एवरीथिंग स्टार्ट्स with your understanding that whatever emotion you are feeling, it's your right कि आप किसी को जाके ये शेयर करें, उससे आपको बेटर फील हो सकता है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने एनवायरनमेंट में, आप प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लें। प्रोफेशनल्स इस चीज के लिए ट्रेंड हैं। उसके ऊपर आपका दूसरा राइट है कि आप जिस भी प्रोफेशनल को कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग का कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोसेस, उनका ओरिएंटेशन, वो कैसे अपना काम करते हैं और आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में वो आपको कैसे हेल्प कर पाएंगे। आपका ये राइट है कि आप उनसे थेरेपी शुरू करने से पहले ये पूछ लें। तीसरी Absolutely. बात, अगर ये दोनों चीजें नहीं हो पा रही हैं, एटलीस्ट आप ये देखें कि आप अपनी बॉडी से कितना डिस्कनेक्टेड है। आपका नींद, भूख, प्यास, इवैक्यूएशन, डेली चीजों को करने की मोटिवेशन कितनी परसेंट है, पहले से अभी में क्या चेंज आया है। इतना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा अपनी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए करना। Correct. Correct. Since एनीथिंग it's यू your right. ऐड No, I think you पल्लवी? beautifully explained it. I think you have beautifully explained it. I don't think that I need to add to it or ruin it by saying more. So, so yes, it's your right. It's one of the basic things in your life, in my life, and you should always uh, ask for a better mental health from yourself and from those around you as well, since it's your right. Yes. And on that note, I invite people again to ask any questions, any comments, Right. anything. Um, so I hope whoever messaged that उनका दिन रोने से शुरू हुआ है, रोने से खत्म होना आपकी और आपके थेरेपिस्ट की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकता है। Hmm. And making a Right. habit, Felix, some person, Felix, Ah, Felicius, I don't know how to Felix pronounce this. Crisis, yes. Yes, she replied, making a habit to spend at least 15 minutes of my morning out in the sun. ये बहुत बहुत अच्छी बात है। Yes. I'm sure you must end up feeling calm in your nervous system after that. And thank you, Anunka, for agreeing with us. So she has commented so true. So I think our audience is very shy or tired at this point. Right. So I think we So should also end up on a high note. And yes, uh, that high if note any, is, हाँ जी, बोलिए। no, I was saying that if we don't have any more questions, then I feel that some of our viewers can go have their dinner if they haven't had their dinner yet. Shy, we Chai. don't know. We cannot we cannot hear you or see you. We can read your comment. If you have any Correct. question, please feel free to ask. Don't hesitate. यहाँ कोई जज नहीं कर रहा है। Right. Okay. So then we should let people
feel shy. That's also their right to feel whatever they are Absolutely. feeling in the moment. Absolutely. They can, yes, again, you have the right to feel shy. But as you are here, you have joined our live. You have two options. You can message either of us and talk about anything that you would like to. मुंह की बात सुने हर कोई, दिल की बात जो जाने कौन, दिल Is that की a बात को जाने song? कौन. ओके. ओके, आई डोंट नो, दिल लेकिन की ये बात तो आप ही जानेंगे. आई थिंक दिल की बात तो आप ही जानेंगे. आवाज. दिल की बात आप ही जानेंगे. आपके अलावा हम नहीं जान पाएंगे साइकोलॉजिस्ट तो, क्योंकि हम तो अंतर्यामी हम. नहीं है. निदा फजली जी. हम्म, जी. तो तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिल की बात कोई जाने, तो प्रोफेशनल्स हैं आपकी दिल की बात सुनने के लिए. दिल की बात भी और मुंह की असली बात भी, जो आप बोलना चाहते हैं, जो बोल जो वो नहीं पा बातें रहे हैं. नहीं जो आप सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं, बट वो बातें जो आप एक्चुअली में बोलना चाहते हैं. एक बार थोड़ा सा अपने अगर दिमाग को हम पॉजिटिवली ओपन वे में देखें, हमें अपने हेल्प जो हमें जिस हेल्प की जरूरत है वो हमें मिल सकती है. एक और चीज, अगर हम थेरेपी में जाते हैं ये सोच के कि अच्छा ट्राई कर रहे हैं, एक सेशन किया वर्कआउट नहीं किया, ये भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है. एक सेशन से फर्क नहीं पड़ता है, और एक सेशन से इतना समझ आ जाता है कि आपके लिए वो थेरेपिस्ट ठीक है कि नहीं, उस क्लाइंट को राइट. समझ आ सकता है. So every time while choosing a therapist, either have faith on a universal power that you will receive help from this person, or follow and trust your gut feeling कि ये थेरेपिस्ट मेरे लिए ठीक नहीं है. लेकिन राइट. अपनी दिल की बात बोलने के लिए गिव अप ना करें. बस इतनी सी बात. बिल्कुल. अगर अभी कोई नहीं सुन रहा है, कुछ देर बाद पक्का कोई सुनेगा, पक्का. इसका बिलीफ मुझे बहुत स्ट्रांगली है. तो जब तक मुंह की बात से गुजारा चल रहा है, दिल की बात को अपने तक रखे, और सही व्यक्ति के मिलने पे या सही प्रोफेशनल के मिलने पे उसको शेयर किया जाए. बिल्कुल. यस. बिल्कुल. बिल्कुल. So I feel, Sumita, that we should call it a night, and यस, ऑफ कोर्स. let's do more lives together so that बिफोर नेक्स्ट we can ईयर. also help more. Right. Yes, so we should conclude with a very energizing positive note that everyone out there feel free to reach either Pallavi or me for any professional help or guidance or counseling. And till then, know and understand that taking care of your emotional need is also your basic human right. Just like right to vote and right to speak, the right to take care of how you are feeling, ये भी बहुत जरूरी है, और ये Right. आपको आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा. So Correct. with this note, let us take leave from this life now. Yes. All right. It was good to have everyone here. We hope that you are going to take care of your mental health from now onwards if you haven't. And if you already have, keep up. And good night, everyone. Good night, Sumedha. Good night, Pallavi. Thank you so much. Take Thank care. you. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you, Alka ji.